Hello guys, welcome to this session. Today we will do 45 plus MCQs on the nuclear physics. So watch the complete session guys, and if any person is visiting this channel for the first time, so you can subscribe the channel, and if you subscribe then don't forget to press the bell icon also. So let us start our session with the first question. The question is India's first nuclear power center is. A option is BARC, B option is Tarapur Nuclear Power Center, C option is Narora Nuclear Power Center, and D option is none of these. So the first nuclear power center or the first nuclear power plant of India is Tarapur Nuclear Power Plant. The first or we can say the oldest nuclear power plant of India. So नाम याद रखिएगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये आता है आपका स्टेट महाराष्ट्र में. ओके. The next question is which of the following used for making nuclear bomb? A option is zirconium, B is uranium, C option is molybdenum, and D option is vanadium. So the right answer is option B, that is uranium. Next question is which of the following can be used to detect the presence of gamma emitting isotopes in drinking water? A option is microscope, B is lead plate, C option is phosphorescence counter, and D option is spectrum photometer. So the right answer is option C, that is phosphorescence counter. Next question is identify the mineral not related with the nuclear energy. A option is monazite, B is thorium, C option is beryllium, and D option is chromium. So the right answer is option D, that is chromium. Next question is Kalpakam is famous for. A option is nuclear power plant, B is defense laboratory, C option is rocket propulsion center, and D option is space center. So the Kalpakam is famous for the nuclear power plant. That is option A is the right answer. Next question is which of the following uranium isotopes is used for electricity generation in nuclear power plant? A option is uranium 233, B option is uranium 234, C option is uranium 235, and D option is uranium 239. So for the electricity generation purpose, uranium 235 isotope is used. So option C will be the right answer. Next question is which of the following types of radiations is most energetic? A option is visible rays, B option is X-rays, C option is ultraviolet rays, and D option is infrared rays. So the right answer is option B, that is X-rays. Next question is Indira Gandhi Nuclear Research Center is situated in. A option is Maharashtra, B is Tamil Nadu, C option is Uttar Pradesh, and D option is Karnataka. So the Indira Gandhi Nuclear Research Center is located in the state of Tamil Nadu. That is option B is the right answer. Next question is the principle of atom bomb is based on. Very important. तो अच्छे से याद रखिएगा. ऑप्शन देखिए. फर्स्ट ऑप्शन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, बी इज न्यूक्लियर फिजन, सी ऑप्शन इज द बोथ ऑफ द अबव, एंड डी ऑप्शन इज द नन ऑफ द अबव. So atom bomb is based on the principle of nuclear fission. That is option B is the right answer. Next question is which of the following principles is the hydrogen bomb based on? Atom bomb is based on the process of nuclear fission, right? So now you have to tell that hydrogen bomb is based on which principle? A option is controlled fusion process, B option is uncontrolled fusion process, C option is controlled fission process, and D option is uncontrolled fission process. So the right answer will be option B, that is uncontrolled fusion process, right? Next question is the energy produced in the sun. A option is by the nuclear fission, B option is nuclear fusion, C option is oxidation reaction, and D option is reduction reaction. This question is also very important. So याद रखिएगा energy produced in the sun because of nuclear fusion process. वहाँ पर nuclear fusion process होता है, right? So option B is the right answer. Next question is a radioactive substance emits. A option is alpha particles, B option is beta particles, C option is gamma rays, and D option is all of the above. So right answer is option D, that is all of the above. It means radioactive substance also emits alpha, beta, and gamma rays. Next question is photovoltaic cell is related to. A option is nuclear energy, B is geothermal energy, C option is solar energy, and D option is wind energy. So right answer is option C, that is solar energy.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करेक्टली लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हियर आर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको दिया है एटॉमिक एनर्जी सेंटर और आपको बताने हैं कि ये एटॉमिक जो सेंटर है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए हम इस यहाँ अगर आपको इस तरह का बहुत कम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आपकी एक क्वेश्चन से बहुत पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको नीचे 4 कोड दिए रहेंगे, वहां से आपको जो है एक पिकअप करना है। तो यहाँ पर देखिए जो कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, ये आता है आपका तमिलनाडु में। जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये उत्तर प्रदेश में आता है। एंड ककरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। एंड ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी सेंटर ये आता है महाराष्ट्र में, राइट। सो अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जो है मैंने जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में ऑपरेशनल है उनको लिखा है, उनका फाउंडेशन ईयर या एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी दिया हुआ है साथ में, और वो कौन सी स्टेट में पड़ता है। सो आपको अच्छे से याद रखना है। हमने किया जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का या ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है तरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन या तरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो थी 1969 में, और ये आता है महाराष्ट्र में। आपको इसी तरह जो है बाकी पावर प्लांट के देख लेने हैं। इनको जो है मोस्टली कई बार स्टैटिक जीके के पोर्शन के अंडर जो है ऐसा क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार ड्राइव्स द एनर्जी फ्रॉम। फर्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन, second one is the gravitational contraction, the option is chemical reaction, and fourth one is the nuclear fission. So the right answer will be option A, that is 1 and 2. It means nuclear fusion and gravitational contraction. Okay. Next question is the reason for the inexhaustible source of energy of stars is. A option is conversion of hydrogen into helium. B option is conversion of helium into hydrogen. C option is decay of radioactive substances. And D option is abundance of oxygen that supports combustion and generate energy. So right answer is option A, that is conversion of hydrogen into helium. Next question is India conducted nuclear test in Pokhran in May 1998. Which state is Pokhran in? आपको बताना है कि न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में हुआ था 1998 में, तो पोखरण जगह जो है वो कौन सी स्टेट में पड़ती है। A option is गुजरात, B is राजस्थान, C option is पंजाब एंड D option is हिमाचल प्रदेश। तो पोखरण पड़ता है राजस्थान में, राइट। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पोखरण टेस्ट कंडक्टेड। हियर A option is 11 June 1998, B is 9 June 1998, C option is 11th May 1998 and D option is 29th May 1998। तो जो ये हुआ था पोखरण टेस्ट 11 मई 1998 को, ये पोखरण का सेकंड न्यूक्लियर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इंडिया था। तो आपको डेट भी याद रखनी है और आपको इसका कोड नेम भी याद रखना है। तो इसका न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति और पोखरण 2। पोखरण 2 मीन्स ये सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया था, तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, राइट। और ये हुआ था 11 मई 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल कोड ऑफ द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974। तो अब यहाँ पर देखिए जो 1998 में हुआ था ये जो है सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था, इसलिए इसको पोखरण 2 कहा जाता है क्योंकि पोखरण जगह पर हुआ था जो राजस्थान में है। अब जो 1974 में हुआ था ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, राइट। सो आपको इसका जो है कोड नेम बताना है कि इस का कोड नेम क्या था। जैसे पहले वाले का था ऑपरेशन शक्ति, सो ए ऑप्शन देखिए स्माइलिंग बुद्धा, बी ऑप्शन थंडरबोल्ट, सी ऑप्शन इज फ्लाइंग गरुड़ एंड डी ऑप्शन इज अग्नि परीक्षा। So the right answer is option A, that is Smiling Buddha और पोखरण फर्स्ट, राइट। और ये इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, that is मई 18, 1974। और जो सेकंड वाला था वो हुआ था मई 11, 1998 को, सॉरी मई 11, 1998। ओके। Next question is what would happen if the control rods are not used in the functional nuclear reactor? A option is the reactor would stop working, B option the chain reaction would cross the limit, C option is reactor would function slowly and D option is the reactor would keep working as before. So the right answer is option B, that is the chain reaction would cross the limit. It means control rods का purpose रहता है chain reaction को control करने के लिए in the nuclear reactor, right? So option B आएगा right answer. Next question is which of the following is not a nuclear fuel? A option is uranium, B is thorium, C option is radium and D option is helium. So the right answer is option D, that is helium. Next question is the energy of an electron revolving in an atom. A option is cannot be negative, B option is always positive, C option is can have only value above 0
and D option is can never be positive. So the right answer is option D, that is can never be positive. Next question is which of the following is the first nuclear power plant in India? A option is Narora, B is Kalpakam, C option is Tarapur and D option is Kota. So हम इसको प्रीवियस कर चुके, वहां पर था न्यूक्लियर सेंटर, सो सेम ही बात है, न्यूक्लियर प्लांट एंड न्यूक्लियर सेंटर. तो ये है तरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आता है महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेट अप इन इंडिया एट. ए ऑप्शन इज राणा प्रताप सागर, बी इज बॉम्बे, C option is Tarapur and D option is Kalpakam. So the right answer is option B, that is Bombay. And this is the India's and the Asia's फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, और आपको इसका नाम याद रखना है, काफी अच्छे से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन. सो इसका नाम था अप्सरा, राइट, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, on 20th January 1957, and this reactor was designed by the Bhabha Atomic Research Center and built with the assistance of the United Kingdom. राइट, ये याद रख सकते हो आप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट इतना जरूर याद रखना है दैट द इंडियाज फर्स्ट और द एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, और इसको सेटअप किया गया था बॉम्बे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैव द हाईएस्ट एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी? ए ऑप्शन इज ककरापर, बी ऑप्शन इज कैगा, C option is Kundankulam and D option is Tarapur. So right answer is option C, that is Kundankulam, और ये आता है तमिलनाडु में, और आप इसकी कैपेसिटी याद रख सकते हो, इट इज 2000 मेगावाट. और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड में देखें, तो कौन सी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वो है जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट. इसकी कैपेसिटी है 7965 मेगावाट और इसका नाम है काशी वजकी करीबा, राइट. आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, राइट. अगर हम कंट्री की बात करें ओवरऑल न्यूक्लियर कैपेसिटी की, सो उसमें जो है यूएसए का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है, ओके. और अगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, सो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है वो जापान कंट्री में है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? ए ऑप्शन इज सोलर सेल्स, बी इज स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, सी ऑप्शन इज डायनेमो एंड डी ऑप्शन इज थर्मोपाइल. So the right answer is option A, that is solar cells. Next question is the final product of the radioactive decay of uranium is. A option is lead, B is radium, C option is thorium and D option is plutonium. So the right answer is option A, that is lead. Next question is what is a nuclear reactor? A option is atom bomb making center, B option is a heavy water pond, C option is uranium-238 emitter and D option is nuclear furnace. So the right answer is option D, that is nuclear furnace. Next question is the hydrogen bomb was developed by. A option is Edward Teller, B option is Werner von Braun, C option is J. Robert Oppenheimer and D option is Samuel Cohen. So the right answer is option A, that is Edward Teller. Next question is which is used as a moderator in the nuclear reactor? A option is thorium, B is heavy water, C option is radium and D option is plain water. So the right answer is option B, that is heavy water used as a moderator in nuclear reactor. Next question is what is the function of a heavy water in a nuclear reactor? A option is slowing down the speed of neutrons, B option is speeding up neutrons, C option is cooling the reactor and D option is stopping the nuclear reaction. So the function of heavy water is to slowing down the speed of neutrons. That is option A is the right answer. Next question is heavy water is produced in India in. A option is Trombay, B is Assam, C option is Delhi and D option is Bhilai. So the right answer is option A, that is Trombay. Next question is enriched uranium is. A option is uranium rods placed in a special shells, B option is natural uranium in which radioactive uranium-235 component is artificially increased, C option is mixture of natural uranium and thorium and D option is chromium coated uranium rods. So the right answer is option B, that is enriched uranium is a natural uranium in which the radioactive isotopes, that is uranium-235 component is artificially increased. Next question is which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? A option is thorium, B is graphite, C option is radium and D option is ordinary water. So the right answer is option B, that is graphite. Next question is which of the following elements does not fall in the category of nuclear fuel?
A option is cadmium, B is thorium, C option is plutonium, and D option is uranium. So the right answer is option A, that is cadmium. Next question is a radioactive material element. India has a large deposit of. कौन सी रेडियोएक्टिव मटेरियल के जो है डिपॉजिट इंडिया में सबसे ज्यादा है? ए ऑप्शन इज प्लूटोनियम, बी ऑप्शन इज रेडियम, सी ऑप्शन इज थोरियम एंड डी ऑप्शन इज यूरेनियम. So the right answer is option C, that is thorium. Next question is which of the following is not a radioactive substance? A option is astatine, B option is francium, C option is tritium, and D option is zirconium. So the right answer is option D, that is zirconium. Next question is nuclear medicine are emerging as a effective tools of therapy and treatment in modern science. These are actually A option is drugs, B is herbs and roots, C option is radioisotopes, and D option is chlorofluorocarbons. So the right answer is option C, that is radioisotopes. Next question is which of the following is not correct? A option is the theory of evolution was propounded by Charles Darwin. B option is the splitting of the nucleus of an atom is called fusion. And C option is dry ice is nothing but solid carbon dioxide. And D option is telephone was invented by Graham Bell. So you have to tell the incorrect statement. So the right answer is option B, that is the splitting of nucleus of an atom is called fusion. इसको fusion नहीं बोला जाता, splitting of nucleus को कहा जाता है fission, right? Splitting को कहा जाता है fission और जो combination of nuclei उसको कहा जाता है फ्यूजन, राइट? कॉम्बिनेशन को फ्यूजन और स्प्लिटिंग को जो है फिजन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस रिलेटेड टू? ए ऑप्शन इज दीज आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर, बी ऑप्शन इज दीज आर स्टार्स, सी ऑप्शन इज दीज आर नेम्स ऑफ फेमस बुक्स, एंड डी ऑप्शन इज दीज आर पावर प्लांट्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दीज आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर. Next question is which of the following elements is used in the solar cells? A option is silicon, B is cerium, and C option is astatine, and D option is vanadium. So the right answer is option A, that is silicon. Next question is cyclotron is used to accelerate. A option is neutron, B is proton, C option is electron, and D option is ions. So the right answer is option B, that is protons. Next question is a breeder reactor is A option is that does not require fissionable material, B option is that utilized only heavy water, C option is that produce more fissionable material that it consumes, and D option is none of the above. So the right answer is option C, that is breeder reactor is that produce more fissionable material that it consumes. Next question is which fuel is used in nuclear reactor in India? A option is uranium 270, B option is uranium 500, C option is gasohol, and D option is uranium 238. So the right answer is option D, that is uranium 238. Next question is nuclear reactor and atom bomb differ in that. A option is no chain reaction take place in the nuclear reactor while this takes place in the atom bomb. B option is a chain reaction in the nuclear reactor is controlled. C option is a chain reaction in the nuclear reactor is not controlled. D option is no chain reaction takes place in the atom bomb while this takes place in the nuclear reactor. So the right answer is option B, that is the chain reaction in the nuclear reactor is controlled. वहाँ पर जो है कंट्रोल रॉड्स यूज की जाती है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बट एटम बॉम्ब में जो है अनकंट्रोल्ड जो है चेन रिएक्शन होती है. So with this guys, I end up today's session. I hope that you love the content. So please give your one like to this video. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.